नमस्कार। मैं सीमा गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, तो आज हम एग्जाम्स के ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं। अब एग्जाम्स को लिखने के लिए कूल होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम सभी को एग्जाम्स के समय बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं। अब जो बॉडी है ना, वो स्ट्रेस के कारणों पे फर्क नहीं करती। उसके लिए स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस होता है। तो किसी भी रीजन से स्ट्रेस हो, चाहे फिर एग्जाम्स का डर हो, या फिर नंबर का डर हो, या फ्यूचर में क्या होगा उसका डर हो, या पेरेंट्स का या टीचर्स का, कोई भी डर हो, किसी भी रीजन से स्ट्रेस हो, अगर हम स्ट्रेस के ऊपर काम करेंगे ना, अपने आप को बेटर करेंगे, तो हम कंफर्टेबली एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं। अब मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक फिक्स की बात कर लेते हैं। क्विक फिक्स में क्या होता है? तो देखो, दो चीजें ना हमारी लाइफ में बहुत असर करती है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसमें क्या होता है, एक तो ब्रीदिंग और एक बॉडी लैंग्वेज। हाउएवर, ब्रीदिंग जो है वो बॉडी लैंग्वेज में मिक्स भी हो जाती है, लेकिन हम अलग अलग भी दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ब्रीदिंग को अपनी ऑब्जर्व करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारी सांस जोर जोर से चलती है। जब हम कूल होते हैं तो हमारी सांस आराम से चलती है। तो आप अपनी बॉडी में अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। अगर सांस जोर जोर से चल रही हो तो उसको स्लो करना आसान होता है। हम इमीडिएटली टेंशन को वैसे नहीं खत्म कर पाते, लेकिन अपनी ब्रीथ को स्लो कर सकते हैं। और जैसे हम ब्रीथ को स्लो करते हैं तो हमारा टेंशन ऑटोमेटिकली कम होते जाता है। तो किसी भी तरीके से ब्रीथ को स्लो कर सकते हैं। नॉर्मल सांस लेके आराम से धीरे से गहरी सांस लेते हुए और फिर सांस को छोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। एक और तरीका है, और फिर होठों को गोल करते हुए सीटी बजाने जैसे। अगर आप इस तरीके से 1 मिनट भी करते हैं तो भी आप फाइंड आउट करोगे कि आपका स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया है। और फिर दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज। तो अपने आप को दो अलग अलग टाइम पे इमेजिन करो कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज टाइट होती है, और जब हम कूल होते हैं, आराम से होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो हमारे शोल्डर्स लूज होते हैं, हमारी बैक इंटैक्ट होती है। तो अपनी खुद की तो अलग अलग टाइम की बॉडी लैंग्वेज को फाइंड आउट कर लो। और फिर जब स्ट्रेस्ड हो तो क्या कर सकते हैं, हम अपने कंधों को, शोल्डर्स को मूव कर सकते हैं, अपनी बैक को मूव कर सकते हैं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को बराबर ला सकते हैं। जॉस टाइट हो तो जॉस को रिलीज कर सकते हैं। तो नोइंगली हम अपनी बॉडी की जो शो करती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं और अपने आप स्ट्रेस के लेवल को डाउन कर सकते हैं। तो ये टिप्स आप ट्राई करके देखिएगा, काफी काम आते हैं। और अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू दिस गाइडेड मेडिटेशन फॉर एग्जाम स्ट्रेस। दिस meditation is designed to help you relax, release tension, and cultivate a positive mindset as you prepare for your exams. Let's begin by finding a quiet and comfortable space where you can fully relax. Find a comfortable seated position or lie down on your back, whichever feels best for you. Close your eyes and take a moment to settle into your chosen position. Start by taking a deep breath in through your nose, allowing your lungs to fill completely with air. Hold the breath for a moment and then exhale slowly and completely through your mouth, releasing any tension
और स्ट्रेस। Let's do this 2 more times. Breathing in deeply and exhaling fully with each breath. One more time. Now bring your attention to your body. Notice any areas of tension or discomfort. With each exhale, imagine releasing that tension, allowing your muscles to soften and relax. Feel the weight of your body sinking into the support beneath you. As you continue to breathe deeply and rhythmically. Now imagine a warm golden light surrounding you, bathing you in a soothing glow. With each breath, feel this light penetrating every cell of your body, bringing a sense of deep relaxation and peace. As you continue to breathe deeply, bring to mind any worries or concerns you may have about your exams. Acknowledge these thoughts without any judgment and imagine placing them on a fluffy white cloud, floating in the sky. Watch as the cloud gently drifts away, carrying your worries with it. One more nice breath in and exhale. Now bring to mind an image of yourself, feeling comfortable and capable as you approach your exams. अपनी बॉडी लैंग्वेज, कैसी बॉडी लैंग्वेज है? See yourself sitting calmly, focused and prepared, answering each question with ease and clarity. Visualize yourself succeeding and achieving your goals with confidence. Now, just see yourself. How can I approach exams with curiosity and excitement instead of fear? What will be my body language when I am calm, curious, and excited? What was body language when I was successful in my past? जो भी उस समय की बॉडी लैंग्वेज थी, उसको हम आज की बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उस समय हमारे शोल्डर्स कैसे थे, तो अगर हम फियर में हैं, तो हम अपने शोल्डर्स अपने सक्सेस वाले शोल्डर्स के जैसे कर सकते हैं। अपनी ब्रीथ सक्सेस वाले ब्रीदिंग के जैसे कर सकते हैं।
अपने जॉज, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने हाथ, सबको हम सक्सेस वाली बॉडी लैंग्वेज के जैसे करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है? मैं उन सपोर्ट सिस्टम्स के लिए कैसे काम कर सकती हूँ और कैसे उनको अपनी जगह पर रख सकती हूँ। मैं कैसे अपना प्रोडक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट बना सकती हूँ। कौन से टूल्स, टेक्निक्स, लोगों का सपोर्ट, वॉट एवर आई रिक्वायर। अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास प्रोडक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट है और उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, और उसके लिए हमको क्या चीजें करने की जरूरत है। अपने आप को बेटर बॉडी लैंग्वेज में रखने के लिए कौन से सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस की जरूरत है? फूड, एक्सरसाइज, entertainment, whatever is required, a balance between work and entertainment. How can I break down my study material into manageable tasks and just keep observing your body language? What steps can I take to maintain work life balance? Just figure out the steps. How can I celebrate progress and achievements? Even a small progress and small achievements we can celebrate, and observe your body language when you are celebrating. How can I offer support to others who are experiencing stress? What gratitude can I cultivate for learning opportunity exams provide? Take a moment to be with you, whatever is there, allowing any insights or inspirations to arise naturally. Just notice what is happening in your body when you are shifting or new thoughts are coming or whatever you are exploring. As we are near the end of this meditation, gently bring into your awareness you, a shifted you. How the shifted you is breathing. Take few deep breaths, feeling the rise and fall of your chest. With each exhale and inhale, now repeat to yourself, I am calm, confident, and fully prepared for my exams. I trust in my abilities and know
that I am capable of succeeding. One more time. I am calm, confident, and fully prepared for my exams. I trust in my abilities and know that I am capable of succeeding. And again, observe your body language. And when you are ready, slowly begin to wiggle your fingers and toes, bringing gentle movement back to your body. Take your time as you gradually transition back to the present moment. And before we end, take a moment to express gratitude for yourself for taking this time to nurture your well being. Know that you can return to this state of relaxation and inner peace whenever you need it. As you continue with your day, carry with you this sense of calm and confidence. Trust in yourself and your abilities, knowing that you are capable of handling whatever challenges come your way. You have got this. And when you are ready, slowly open your eyes and return to the present moment, feeling refreshed, rejuvenated, and ready to tackle your exams with a newfound sense of ease and clarity. Namaste. All the best for your exams.